So I am sharing my screen. Please tell me whether it is visible or not. So students, uh, what is structure? What is the purpose of structure? Suppose we want to write a program by which we manage or handle the record of 3 students in our class. ऐसा सोचो कि हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं जिसके जरिए हम लोग अपने क्लास में 3 स्टूडेंट का रिकॉर्ड को हैंडल करना चाहते हैं. Record means the student record may consist of name of the student, roll number, age, marks, etc. स्टूडेंट रिकॉर्ड मतलब क्या क्या है? स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, उसका एज, कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है उस स्टूडेंट, ये सब. सो इन ऑर्डर टू टेक records for 3 students we must have 3 set of 4 variables. अगर मेरे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड इन चारों चीजों से बना हुआ है, यानी कि नेम, रोल नंबर, एज और मार्क्स, सो हाउ मच वेरिएबल्स वी नीड? For each and every student we need to take 4 variables. For the student 1, उसका नाम, रोल नंबर, एज और मार्क्स लेने के लिए मुझे 4 वेरिएबल चाहिए होगा. Similarly, for the second student, again I need to take 4 variable. For the third student, again I need to take 4 variable. So for this, in order to take records for 3 students, we must have 3 set of 4 variables. 3 set of 4 variables. That means there are total number of 12 variables I need to take, isn't it? Okay. So here it's showing the variables. So name 1 20, name 2 20, name 3 20 are the 3 arrays. Roll 1, roll 2, roll 3, those are the 3 variables. Age 1, age 2, age 3 for 3 variables. M1, M2, M3 are the 3 variables. These variables are actually used to store the records of these 3 students. ठीक है? तो मुझे बताओ कि these set of variables may solve our purpose, but there is a major drawback with this approach. क्या ड्रॉबैक है इसमें, बता सकते हो कोई? This set of variables may solve our purpose. What is the purpose here? Actually, here I want to take the record for these 3 students. These records consists of 4 things: name, roll number, age, and marks. So all these records, in order to take all these records, I have to declare this set of variables. For the first student, I have to take this 4 variable. For second student, again these 4 variables are required. For third student, these 4 variables are required. But in this approach, there is some drawback. There is some difficulty. Can you tell me? Can you guess? Just try to guess. Yes, different data type is required here. For name, I have to take a character type array. For role, I have to take
three integer type variables. For age, again, three integer type variables are required. For marks, suppose some three float type of variables are required. So different data type, इसको तुम कैसे डिसएडवांटेज बोल सकते हो, ड्रॉबैक बोल सकते हो? बोलो, जो भी दिमाग में आ रहा है बताओ ना मुझे. टेकिंग टू मच टाइम. हाउ इट टेक्स टू मच टाइम? कैसे लगता है कि ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा? तीन स्टूडेंट है, तीनों का रिकॉर्ड मुझे रखना है, स्टोर करना है, तो जितना टाइम लगना चाहिए उतना टाइम ही लगेगा. मान लो कि ये जो फर्स्ट एरे है, फर्स्ट कैरेक्टर टाइप एरे, उसमें मैं राहुल मतलब फर्स्ट स्टूडेंट का नाम स्टोर किया. रोल वन जो है उस पे रोल नंबर वन स्टोर किया. एज वन पे 20 स्टोर किया. वेरिएबल एम वन 73.3. नेम टू प्रिया. रोल टू 15. एज टू 19. मार्क्स टू 81.6. नेम थ्री राजा. रोल थ्री 6. एज थ्री 21. मार्क्स थ्री 72.9. टेल मी. अच्छा, forgot about this thing. Just let's consider a real life example. Just a simple example. एक कहानी सुनो, ध्यान से सुनो. मैं पूछूंगा आप लोगों से, आप लोगों को आंसर करना होगा, ठीक है? अच्छा, कौन कौन हो तुम लोग? नेहा, अभिनव, सुदेशना. नेहा, अभिनव, सुदेशना, तुम तीनों, ठीक है? एक टेबल है, एक टेबल के ऊपर मैं टोटल 9 पेन को रखा हूं. पेन, पी एन, पेन, ओके. जिनमें से 3 पेन है ब्लू इंक का, 3 है रेड इंक का, और 3 है ब्लैक इंक का. लेकिन वो जो डिफरेंट डिफरेंट 9 पेन्स है, 9 पेन का कंपनी डिफरेंट है, 9 पेन का प्राइस डिफरेंट है, 9 पेन का क्वालिटी डिफरेंट है. बट बाहर से पता चल रहा है कि दिस पेन इज अ ब्लू पेन, दिस पेन इज अ रेड पेन, दिस पेन इज अ ब्लैक वन. ये पता चल रहा है, ठीक है? बट दे आर डिफरेंट. They're different in say their appearance, they're different in price, they're different in company. Okay. अब मैं नेहा तुमको बोल रहा हूं कि भाई एक काम करो, तुम टेबल पे जाओ, टेबल के पास जाओ, और तुम्हारे लिए 3 पेन है वहां पे, तुम तीनों पेन वहां से ड्रॉ करो, लेके आओ. अभिनव को भी बोला कि तुम भी जाओ, जाके 3 पेन तुम्हारे लिए ड्रॉ करके लाओ. 3 मतलब 3 अलग कलर का पेन, ठीक है? एक रेड, एक ब्लू, एक ब्लैक. सुदेशना को भी बोला गया कि तुम जाओ और 3 पेन अपने लिए लेके आओ. 3 पेन तुम्हारे लिए रखा हुआ है, लेके आओ. तुम लोग क्या पूछोगे मुझसे? कोई क्वेश्चन होगा तुम लोगों का? क्या क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन होगा? नेहा, तुम्हारा कोई क्वेश्चन रहेगा अगर ऐसा तुमको बोला जाए कि भाई जाओ 3 पेन ड्रॉ करके लाओ? अभिनव, अभिनव, क्या करोगे? वेरी गुड. गुड आंसर. सबसे अच्छा है कि जाएंगे पहले, भाग के जाएंगे, जो अच्छा वाला पेन है वो मेरे लिए चुन के लेके आ जाएंगे. लेकिन देखो, यहाँ पे मैं बताया नहीं हूँ, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करके नहीं दिया हूँ कि भाई ये तीनों पेन तुम्हारे लिए है अभिनव, ये तीनों पेन नेहा तुम्हारे लिए है, ये तीनों पेन सुदेशना तुम्हारे लिए है. ये कहीं पर मैं मेंशन नहीं किया.
तो इसके लिए क्या होगा, तुम लोगों में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि भाई मुझे ड्रॉ करना है, 3 पेन मुझे लेना है टेबल के ऊपर से, टेबल से, तो कौन सा वाला 3 ले, कौन तीनों पेन मेरे लिए है? सो दिस 3 पेन्स आर नॉट एसोसिएटेड, एक्चुअली नॉट एसोसिएटेड टू एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट, है ना? अब इसी कहानी को थोड़ा दूसरे तरीके से बताते हैं। वही सेम टेबल के ऊपर 9 पेन है, 9 पेन्स आर देयर, बट वहां पे 3 बॉक्स रखा हुआ है, 3 बॉक्सेस आर देयर। फर्स्ट बॉक्स में 3 पेन रखा हुआ है 3 कलर का, सेकंड बॉक्स में भी 3 पेन रखा है, थर्ड बॉक्स में भी 3 पेन रखा है। अब फर्स्ट बॉक्स के ऊपर नाम लिखा हुआ है अभिनव, सेकंड बॉक्स में नेहा, थर्ड बॉक्स में सुदेशना, लाइक दैट। अब मैं बोला कि जाओ अभिनव, तुम जाओ जाके अपना तीनों पेन उठा के लाओ, देन इज देयर एनी कंफ्यूजन? तब तब अभिनव को टेबल के पास जाने के बाद पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला बॉक्स मेरे लिए है, एंड दिस 3 पेन्स आर बिलोंग्स टू मी, एक्चुअली दिस थ्री पेन्स आर फॉर मी। नेहा को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे यही तीनों पेन उठाना है, सुदर्शना भी समझ जाएगा कि हाँ इसी तीनों पेन को मुझे लेना है। ओके, गेटिंग इट स्टूडेंट्स? मैं सबसे पूछ रहा हूं, सब लोग ये कहानी समझे? जस्ट ये बताओ कि ये कहानी समझ में आया कि नहीं। अगर ये कहानी समझ जाओगे तो ये स्ट्रक्चर बहुत आसान हो जाएगा तुम लोगों के लिए। রিমেনিং স্টুডেন্টস, ঋতিকা, বুঝতে পেরেছো কি বললাম? গল্পটা বুঝতে পেরেছো? ओके, सो यहाँ पे भी देखो वही सेम कंफ्यूजन होगा। इन दिस एग्जाम्पल द सेम थिंग इज हैपेंड। यहाँ पे ये जो वैल्यूज है, राहुल 1, 20, 73.3, 15, प्रिया 19, 21, 6, राजा 72.9, 81.6, इन सबको तुम सोचो, दे आर द डिफरेंट पेन्स, दे आर द डिफरेंट एलिमेंट्स। यहाँ पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि दिस 4 वेरिएबल्स आर associated with this first student. This second 4 variable is associated with the second student, and these last 4 variables are associated with this student. कहीं पर ये चीज मेंशन है? कहीं पर ये पता चल रहा है कि राहुल का ही रोल नंबर 1 है? हो सकता है तो राहुल का रोल नंबर 6 होगा, राहुल का एज तुम्हारा 19 होगा, प्रिया का मार्क्स 73.3 होगा, राजा का एज 20 होगा, हो सकता है तो। गेटिंग इट? मतलब these वेरिएबल्स, जो इंडिविजुअल वेरिएबल्स हम लोग ले रहे हैं, these इंडिविजुअल वेरिएबल्स आर नॉट एसोसिएटेड। The main issue that in this case, these individual variables are not associated with each other. That is, we cannot ensure that first set of variable represent first student, second set of variable is for second student, etc. Here, the name of the first student may be stored in name1 array, whereas roll number of first student may store in roll3 variable। जो मैं बताया अभी अभी वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा हो सकता है। But if we consider a variable which will store all the details of a particular student, then this drawback can be resolved। क्या कहा गया? मतलब पेन्स को अभी ऐसे ही बिखरा के नहीं रखेंगे हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स लेंगे, जो बॉक्स के अंदर हम लोग वो सारे पेन्स को डाल देंगे। मतलब एक स्टूडेंट के लिए जितना पेन ड्रॉ करना है वो सारे पेन को एक बॉक्स पर रखेंगे। मतलब एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसा सिंगल वेरिएबल हम लोग कंसिडर करेंगे जो ये सारा वैल्यूज को एक साथ में एकोमोडेट कर पाए, एक साथ में एकोमोडेट कर सके। गेटिंग इट स्टूडेंट्स? हियर we have to take a variable, we have to take a variable which will accommodate all these values। मतलब एक वेरिएबल के अंदर
नाम भी होगा, रोल नंबर भी होगा, एज भी रहेगा, मार्क्स भी रहेगा। देखो अब तो मैं बता सकता हूं, अब तो मैं ये इंश्योर कर सकता हूं कि दिस एंटायर वेरिएबल इज फॉर द फर्स्ट स्टूडेंट, दिस एंटायर वेरिएबल इज फॉर द सेकेंड स्टूडेंट। ऐसा मैं तो बोल सकता हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन आएगा? बॉक्स में जो पेन तीन रखा था मैंने, जिसके ऊपर मैं नाम लिख के दिया था, नेहा, एक के ऊपर अविनाभ, दूसरे के ऊपर सुदेशना, तब जाके पता चल जा रहा था स्टूडेंट्स को कि हाँ ये वाला बॉक्स मेरे लिए है, इसमें जो भी है, जो चीज भी है, जो तीन पेन है, तीनों पेन मुझे ही लेना है। ऐसा नहीं कि सुदेशना जाके फर्स्ट बॉक्स से एक पेन उठाया, सेकंड बॉक्स से दूसरा पेन उठाया, थर्ड बॉक्स से तीसरा पेन उठाया, ऐसा नहीं। एक बॉक्स में जितना कुछ रखा हुआ है सब कुछ उसी के लिए है, प्रिया के लिए भी वो सेम। सो इस तरीके से अगर हम लोग वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम लोग मल्टीपल टाइप ऑफ मल्टीपल डेटा स्टोर कर सके, तो वो मेरा ये पर्पस को सॉल्व कर देगा। गेटिंग इट? बट till now we do not have any data type by which we can create such type of variable which will store multiple types of multiple data। देखो अभी हम लोगों के पास कौन कौन सा डेटा टाइप है, बेसिक डेटा टाइप्स क्या क्या है, क्या क्या पढ़े हैं हम अभी तक? हम बेसिक डेटा टाइप्स, बेसिक डेटा टाइप्स, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। एग्जैक्टली। तो इंटीजर टाइप वेरिएबल अगर ले रहे हैं तो इंट ए लेंगे, ठीक है, इंट ए है। लेकिन ए जो वेरिएबल बनेगा मेरे पास, उसमें मैं क्या कर सकता हूं, उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा एक इंटीजर वैल्यू को रख सकता हूं। मैं एक फ्लोट वेरिएबल को अगर डिक्लेयर करता हूं, तो उस वेरिएबल के साथ मैं क्या कर सकता हूं, मैक्सिमम उस पे एक फ्लोट टाइप डेटा को स्टोर कर सकता हूं। लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट कुछ अलग है। मुझे एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट करना है जिसमें मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करना है। अच्छा, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए तो मेरे पास एक तरीका है, एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ऐसा तरीका कौन सा वाला है स्टूडेंट्स? कौन सा कॉन्सेप्ट? एग्जैक्टली, एरे। एरे को यूज करके तो हम लोग ये काम कर लेंगे। फिर क्या सब स्ट्रक्चर वक्चर बता रहे हैं? हाँ, एरे को स्टोर करके, एरे को यूज करके हम लोग मल्टीपल डेटा को एक साथ में रख सकते हैं। वी कैन स्टोर मल्टीपल डेटा, वी कैन स्टोर मल्टीपल। हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ, एरे को लेकर अगर हम लोग यूज करते हैं, एरे को अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसमें हम लोग मल्टीपल डेटा को एक साथ में स्टोर कर सकते हैं, एक से ज्यादा वैल्यू उस पर रख सकते हैं। बट वहां पे जो चीज हम लोग कर सकते हैं वो है कि हम लोग एक साथ में सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को या फिर होमोजीनियस डेटा को रख सकते हैं। मैं एक एरे एरे लिया, इंटीजर टाइप का एरे लिया, तो वो इंटीजर टाइप एरे में मैं इंटीजर टाइप डेटा को ही रख पाऊंगा। एक साथ में 5 इंटीजर, 10 इंटीजर, 20 इंटीजर्स, 100 इंटीजर्स आई कैन स्टोर। बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट थोड़ा अलग है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट वो नहीं है कि एक साथ में एक ही तरीके का डेटा मुझे रखना है। यहाँ पे मुझे एक साथ में एक कैरेक्टर टाइप एरे रखना है, एक इंटीजर टाइप वैल्यू रखना है, दो इंटीजर टाइप वैल्यू रखना है, एक फ्लोट टाइप वैल्यू रखना है। तो एरे से ये काम नहीं बनेगा, हम लोग कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। मतलब ऐसा कोई डेटा टाइप मुझे पहले क्रिएट करना पड़ेगा जिसके जरिए, इसके थ्रू हम लोग ऐसा वेरिएबल क्रिएट कर सके। ओके, till now we do not have any data type by which we can create such type of variable which will store multiple types of multiple data. So for this, actually we are use structure. What is structure? A structure is a user defined data type in C.
A structure creates a data type that can be used to group items of possibly different types into a single type. क्या मतलब है? मतलब स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग एक ऐसा डेटा टाइप बना सकते हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप का एलिमेंट्स को ग्रुप कर सकते हैं और ग्रुप करके वो एंटायर चीज को एक सिंगल डेटा टाइप के तौर पे शो कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं हम लोग ब्रदर बोलेंगे ऐसे। मतलब जो पर्पस हम लोगों का था अभी, जो डिफिकल्टी आ रहा था, वो डिफिकल्टी को हम लोग बाय यूजिंग स्ट्रक्चर रिजॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रक्चर है क्या? इट इज नथिंग बट अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, एंड बाय विच स्ट्रक्चर, बाय विच we can we can group item of possibly different types of data into a single type। हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को एक साथ में लेके एक सिंगल टाइप बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, now let's see how a data type, user defined data type, rather using structure we can define। देखो इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। लिखा जाता है struct, struct, struct। here struct is a keyword, then followed by name of the structure, student। so struct space student, then within the braces we have to mention all the members or fields of this data type। जैसे कि अभी जो एग्जांपल है मेरा, वो उससे उस पे मुझे कैसा वेरिएबल चाहिए? मुझे एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसपे मेरा टोटल ऑफ 4 पार्टीशन बने, है ना स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्टीशन में हम लोग नाम रखेंगे, सेकंड पार्टीशन में हम लोग रोल नंबर रखेंगे, थर्ड पार्टीशन में हम लोग एज को रखेंगे, एंड फोर्थ पार्टीशन इज फॉर स्टोरिंग द मार्क्स। सो 4 पार्टीशन होगा, एक वेरिएबल बनेगा जिसमें मेरा 4 पार्टीशन होगा, 4 डिवीजन होगा। तो इसको हम लोग ऐसे वेरिएबल कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए पहले इसका जो टाइप होगा, डेटा टाइप होगा, वो डेटा टाइप को पहले हमें डिक्लेयर करना होगा। सो यूजिंग स्ट्रक्चर हियर आई एम डिक्लेयरिंग द डेटा टाइप फर्स्ट। तो डेटा टाइप को कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं? देखो तरीका देखो, लिखना पड़ता है पहले स्ट्रक्ट, struct, स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड, देन स्पेस देके डेटा टाइप का जो भी नाम तुम लेना चाहते हो वो नाम यहाँ पे लिखो। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट ले सकते हो, या फिर यहाँ पे तुम STU ले सकते हो, मतलब जो चाहिए नाम, आइडेंटिफायर, दिस आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर तुम अपने तरीके से अपने मन से तुम ले सकते हो। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिया। उसके बाद विद इन द ब्रेसेस मैं नया डेटा टाइप में, मतलब नया डेटा टाइप का जो वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल में क्या क्या पार्टीशन होगा, उन सारे पार्टीशंस के बारे में डिटेलिंग मुझे यहाँ पे करना होगा। ओके सो क्या क्या चीज रखना है, वो नया वाला वेरिएबल में क्या क्या चीज मैं स्टोर करना चाहूंगा? नाम स्टोर करना चाहूंगा, रोल नंबर स्टोर करना चाहूंगा, एज स्टोर करना चाहूंगा, मार्क्स स्टोर करना चाहूंगा। सो फॉर दिस आई हैव डिक्लेयर्ड ऑल दिस वेरिएबल्स हियर, char name 20, int role, int age, float m, and these things are known as members or fields of the structure। okay okay student, guess how many bytes will be allocated by this above declaration? कितना बाइट एलोकेट होगा? कैन यू टेल मी? सेवन कैसे होगा भाई? 4 + 2, फ्लोट टाइप वेरिएबल 4 बाइट, इंटीजर टाइप वेरिएबल 2 बाइट, 4 + 2 6 + 2 8, कैरेक्टर टाइप वेरिएबल 1, 8 + 1 9, isn't it? 9।
अरे भाई 9 कैसे है, यहाँ पे तो कैरेक्टर टाइप एरे है ना 20, मतलब ये 20 बाइट्स, एक एक कैरेक्टर वेरिएबल 1 बाइट, सो एरे इज देयर, सो 20 into 1 20 bytes, 20 plus 2 22 plus 2 24 plus 4 28, yes 28. For character type variable it is 20 byte, roll number roll 2 bytes, age 2 bytes, marks 4 bytes, so total 28 bytes. Okay. The declaration of structure, the declaration of structure above does not reserve any space but just gives the format of the structure, that is its type. यानी कि मैं जो पूछा यहाँ पे आप लोगों को से कि कितना बाइट एलोकेट होगा, इससे इससे कितना बाइट एलोकेट होगा, आप लोग क्या सुन रहे हो, आप लोगों को पता है. The declaration of structure above does not reserve any space but just gives the format of the structure, that is its type. फर्स्ट सेंटेंस को दोबारा पढ़ो. The declaration of the structure above does not reserve any space but just gives the format of the structure, that is its type. मतलब क्या, मतलब ये जो डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन से कोई भी मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा, ये सिर्फ एक डेटा टाइप का डिक्लेरेशन है, सिर्फ एक डेटा टाइप डिक्लेयर्ड हुआ तुम्हारा. क्या क्या डेटा टाइप था अभी तुम लोगों के पास, अभी तुम लोगों के पास इंट था, फ्लोट था, चार डेटा टाइप था, बेसिक डेटा टाइप, डबल था, ये सब डेटा टाइप, प्रीडिफाइंड डेटा टाइप तुम्हारे पास था. लेकिन एक by using this declaration, by using this declaration, now you have a new data type. The name of the data type is student. एक बात बताओ तो, मैं अगर लिखता हूं सिर्फ इंट, कितना एलोकेशन, कितना बाइट का एलोकेशन होगा मेमोरी में, अगर सिर्फ इंट लिख के मैं प्रोग्राम को रन कराता हूं, हाउ मेनी बाइट्स विल बी एलोकेटेड, गेटिंग माय क्वेश्चन, आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन. Yes, there will be no allocation until I am declaring a variable int x, until I am not declaring a variable of type integer. Only int is not sufficient to allocate memory space. वेरिएबल जब तक नहीं बनाएंगे तब तक डेटा टाइप सिर्फ एक डिक्लेरेशन है, डेटा टाइप का कोई मतलब एलोकेशन नहीं बनता सिर्फ डेटा टाइप लेने से. मेमोरी कब बनता है, मेमोरी स्पेस कब एलोकेट होता है, जब हम लोग उस डेटा टाइप का वेरिएबल बनाते हैं. ठीक है, फिजिकल एग्जिस्टेंस बनाते हैं. वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है डेटा टाइप का फिजिकल एग्जिस्टेंस. ठीक है, मतलब ये जो डिक्लेरेशन है, स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन है, ये सिर्फ एक न्यू डेटा टाइप बना है मेरे पास. अभी तक इस न्यू डेटा टाइप का कोई वेरिएबल हम लोग नहीं लिए. स्टूडेंट्स गेटिंग इट. So with the help of this declaration, no bytes will be allocated. So this is wrong actually.
The declaration of structure above does not reserve any space. It actually gives the format of the structure, that is its type. That is why we cannot initialize the members of the structure with declaration. मतलब ऐसे हम लोग नहीं कर सकते, जब स्ट्रक्चर को ले रहे हैं तब ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते कैर नेम इज इक्वल्स टू राजा, नेम इज इक्वल्स टू राजा, इंट रोल इज इक्वल्स टू 13, इंट एज इज इक्वल्स टू 20, फ्लोट एम इक्वल टू 73.3. ये हम लोग नहीं ले सकते. दिस इज रॉन्ग. द above declaration is incorrect because no memory is allocated for it. अभी तक कोई मेमोरी एलोकेट ही नहीं हुआ. मेमोरी इज एलोकेटेड ओनली व्हेन वेरिएबल्स आर क्रिएटेड. मेमोरी कब बनेगा? जब हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, जब हम लोग वेरिएबल क्रिएट करेंगे. ओके, सो हाउ टू क्रिएट वेरिएबल ऑफ अ स्ट्रक्चर? लुक, a structure variable can either be declared or created with structure declaration or as a separate declaration like basic types. मतलब दोनों तरीका है, दोनों तरीके से हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं, एक स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं. दो तरीका है. दिस इज प्रोसेस 1, दिस इज प्रोसेस 2. जब हम लोग स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, जब हम लोग स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर रहे हैं, at that time we may declare the variable here. That means struct student, then within the braces members, then after the closing brace I can take all these variables here, s1 comma s2 comma s3, like that. Okay, so this is the first approach. And in the second approach, first just declare the structure with the syntax struct student all the members semicolon, the braces closing brace semicolon. After that write down the data type name followed by the variable name, struct student s1 comma s2 comma s3, this way. ठीक है? बोलो, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया. हाँ, कौन सा? मतलब कौन सा चीज को रिपीट करूं, बताओ. स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे लेते हैं? स्ट्रक्चर का वेरिएबल हम लोग दो तरीके से ले सकते हैं. एक फर्स्ट तरीका क्या है कि जब हम लोग स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर रहे हैं. स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करते हैं? स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग लिखते हैं ऐसे स्ट्रक्ट, देन स्ट्रक्चर का नाम, देन उसका मेंबर्स. अब जब तुम डिक्लेयर कर रहे हो तभी इस ब्रैकेट के और सेमीकोलन के बीच में तुम वेरिएबल का नाम को ले सकते हो. s1 s2 s3 तुम यहाँ पे ले सकते हो. ऐसा कर सकते हो. या फिर तुम स्ट्रक्चर को बना लिए, स्ट्रक्चर को बना लेने के बाद जैसे हम लोग बेसिक डेटा टाइप में जैसे वेरिएबल लेते हैं, जैसे लिखते हैं इंट स्पेस वेरिएबल नेम कॉमा वेरिएबल नेम, ऐसे वो भी तुम कर सकते हो. जैसे ये पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर को पहले मैं डिफाइन कर लिया, उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम लिखा, मतलब डेटा टाइप का नाम लिखा, देन आफ्टर आई एम टेकिंग द वेरिएबल्स s1 s2 s3. So these are the two approaches by which we can take the variables. Getting it, students? हाँ बोलो. Yes, after that we can initialize these variables. So that is our next discussion. But before that, tell me, for these three variables, how many bytes will be allocated? Yes, it will be 28 into 3, 84 thing. 84, 28 into 3.
28 into 3 bytes. Now let's see how we can access these variables. How we can access these variables. How to access structure fields or members. So with the help of this declaration, with the help of these variables, we actually allocate the memory. So just consider this is your first variable S1, this is your second variable S2, this is your third variable S3, and all these variables, all these three variables having its different partitions. The first variable have 4 partition, second variable also have 4 partition, third variable also have 4 partition, isn't it? And the name of the partitions are name, role, age, m, name, role, age, m. So how can we access these particular members of this variable? With the help of dot membership operator. Okay, with the help of dot membership operator we can access different member of a structure type variable. कैसे? मैं अगर इस पर्टिकुलर रीजियन को, इस पर्टिकुलर पार्टीशन को एक्सेस करना चाहता हूँ विद मतलब इस वन वेरिएबल का ये रोल नंबर पार्टीशन को मैं अगर एक्सेस करना चाहता हूँ और यहाँ पे अगर 1 रखना चाहता हूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? रोल इज इक्वल्स टू 1, है ना? क्या लिखूंगा मैं? क्या नाम है पार्टीशन का? नाम क्या है? रोल. I may write roll is equals to 1. हाँ, but students, if I write roll is equals to 1, is there any problem? कोई प्रॉब्लम खड़ा होगा यहाँ पे? हाँ, एक प्रॉब्लम खड़ा होगा. क्या प्रॉब्लम खड़ा होगा? क्यों खड़ा होगा कि रोल वेरिएबल जो है वो 3 बार है यहाँ पे. इस वेरिएबल के अंदर है, S2 के अंदर भी है, S3 के अंदर भी है. तो मैं जो लिख रहा हूँ रोल इज इक्वल्स टू 1, वो 1 कहाँ पे जाके स्टोर होगा? किस पार्टीशन में जाके स्टोर होगा? यहाँ पे, यहाँ पे, या फिर यहाँ पे? ये कैसे पता चलेगा? ये पता लगाने के लिए हम लोगों को जो वेरिएबल का नाम है, एंटायर स्ट्रक्चर वेरिएबल का जो नाम है, उसको भी यूज करना पड़ेगा. मतलब मुझे लिखना पड़ेगा s1 डॉट रोल. लुक, s1 dot roll. This thing actually refers that particular region, that particular location. s1 dot roll is equals to 1. Similarly, अगर मैं ये मार्क्स सेकेंड लोकेशन का जो मार्क्स है इसको अगर एक्सेस करना चाहता हूं तो लिखना पड़ेगा s2 डॉट m. अगर ये एज को मुझे एक्सेस करना है तो क्या लिखना पड़ेगा? राइट, that should be s3 dot h. So this is the way to declare a structure. This is the purpose of structure. So this is the purpose of structure. This is the definition of structure. This is how we can create variable of structure, and this is how we can access different fields or members of a structure type variable. So tell me if you have any query, any doubt up to this. I will repeat. Within the structure means this one. No, no, no. We cannot initialize it in this way.
No, after taking the variable, you can initialize it. After taking the variables, you can initialize it. But when you are declaring this structure actually, then you cannot initialize these members. Why? Because when you are actually declaring this structure, you cannot reserve any room for that. You cannot allocate any memory space for that. So without allocating any memory, how can you initialize any value into it? Yes, yes, tell me. uh, yes, yes. Before this semicolon, if we take s1, s2, s3, then also you cannot initialize these variables. These variables. You cannot write int roll equal to 13. Actually, this is the structure. This is the skeleton of your data type. Okay. And when you are declaring this variable, then you reserve the room for that. So after reserving the room, after allocating the space, then you can initialize these blocks. Then you can initialize these partitions with the help of this variable name and dot membership operator. You may write s1 dot roll. This is the initialization. S2 dot m. This is the initialization actually. Okay. So other students, any query, any doubt? Tell me. If you have any query, any doubt, please ask me. This is a very important concept. This is a very important chapter. So let's write a code for it and see how it works. So is it visible now, students?
For the simplicity, I'm taking only two fields, okay? Name and role for student. And I'm using the second process to declare variables. So how many students I want to store the record for how many students? Three students. So how many variables I need to take? Three variables. Yes, yes, yes. Oh yes, right. Yes, three dot role. Students, let's see. In the main function, I'm taking the definition of the structure. This is the definition of the structure, struct stu. Then after I'm giving the curly braces, and within the curly braces, I'm declaring the members of the structure. So for the simplicity here, I'm taking only two fields,
name and roll number. Okay. So in order to store, yes, yes. So in order to store, I'm taking a character type name, a character type array of size 20, and a role variable role. After that, I'm taking three structure type variables. So here I'm using the second process, second approach. So I'm discussing there are two approaches by which we can declare the structure type variable. We can declare it after taking the definition of the structure in this way, and the first approach, in the first approach we may write the variable name here also. Here also I can write s1 comma s2 comma s3. Okay, but I preferred the second one. Just take the name of the data type, then after the variable name s1 s2 s3. Okay, then after see how can I initialize those variables. I'm writing s1 dot name equal to Amit, s1 dot role equal to 2, s2 dot name equal to Sumi, s2 dot role equal to 2, s3 dot name equal to Raj, s3 dot role equal to 3, like that. Okay, and after that I'm just displaying that this value of this variable. So puts s1 will display the name of the first student. S1 dot roll will display the name of roll number of the first student. Puts s2 puts s2 comma s2 dot name will display the name of the second variable, second student. S2 dot roll will display the roll number of the second student. In this way, all the values will be displayed. Let's see how it works. See, we cannot initialize this type. So see, students, this is the output. The record of the first student Amit, roll number 1, record of the second student Sumi, roll number 2, record of the third student Raj, roll number 3. Getting it? Any query, any doubt up to this? Any query? Ask me. Okay. So this is how we can create a structure. We can declare variable of structure. We can use the variables of the structure. In our next class, we will learn, discuss about more on structure. Okay, more topics on structure. So this is all for today. Thank you, students. Give your attendance and leave. And one more thing. Hello, you have to appear tomorrow's competition, quiz competition. Okay, don't forget. Hmm.
I will share all the details in our WhatsApp group. Please go through that and attend. Hmm. Thank you.